Good morning, everyone. We'll continue with the LPP part. The next topic is dual of a linear programming problem. Okay. The dual of a, till now we have seen how to solve an LPP by simplex method, by big M method. Simplex method is applied when the objective function is maximization and the constraints are less than or equal to. Right hand side of each constraints are positive. Big M method is applied when we have objective function maximization. There is no restriction on the constraints and the right hand side of each constraint is positive. Then we have the extra part, what we have done in Big M method is we used to add an artificial variable when we had equality constraint or a greater than or equal to constraint and give the cost as minus n. Okay, so next part is finding the dual. So whatever is the given problem, that problem is called as a primal. Okay? The given problem is called as the primal problem. And we are going to find the dual of the primal. So whatever problem is given, that is called as the primal problem. And we are going to calculate the dual of this primal. Now suppose first type is if the given problem or if the primal problem is a maximization problem, then all the constraints should be less than or equal to. Suppose if the given problem is maximization, then all the constraints should be less than or equal to. If there are any greater than or equal to constraint, then convert that to less than or equal to constraint. Then in the dual, the objective function will become minimization with constraints greater than or equal to. Okay, so if the given problem is maximization, then dual will become minimization. And when you have a maximization problem, all the constraints should be less than or equal to. And the dual will become minimization with all the constraints greater than or equal to except the last non-negativity constraint. Second condition is ulta uska. If it is a minimization, then you should have greater than or equal to constraint. Then the dual will become maximization with less than or equal to constraint. Okay, so maximization है तो less than or equal to constraint होना चाहिए और अगर minimization है तो greater than or equal to constraint. अगर maximization है तो इसको minimum में convert, the dual will become minimum और अगर minimum दिया है तो dual हो जाएगा maximum. That is the first part. Second part, the cost coefficients. The cost coefficients matlab the coefficients of x1, x2, all the variables in the objective function. जो z का function है, वहाँ पे जो भी coefficients है variables के, that is called as the cost coefficient. The cost coefficients in the primal will become the right hand side of each constraint. The cost coefficient of the given problem will become the right hand side of each constraint, and similarly the right hand side of each constraint will become the cost coefficient. These two values, these two coefficients gets interchanged. जो objective function में है वो right hand side में आ जाता है और जो right hand side में है वो objective function में आ जाता है. Then we have third condition is number of constraints becomes the number of variables. Number of variables will become the number of constraints. Unrestricted variable becomes equality constraint and equality constraint becomes the unrestricted variable. So I'll explain all these things with the help of an example. It will be clear what will happen in the dual. So these type of questions are expected under the, normally when we have the offline exam, it is used to be, they used to ask these type of questions in compulsory part. So here also you can get this question in MCQ for 2 marks. Write the dual of an LPP. Okay, so here 100% there will be one problem on this dual. So here maximum है तो minimum हो जाएगा, minimum है तो maximum हो जाएगा, cost will become the right hand side will become the cost, constraints will be converted to, number of constraints will become the number of variables, similarly number of variables, number of constraints, unrestricted variable कोई है तो equality constraint, क्योंकि जो variable है वो constraint में हो जाता है. तो अगर कोई भी वेरिएबल सपोज यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ पे सेकेंड कंस्ट्रेंट इक्वालिटी कंस्ट्रेंट हो जाएगा. Okay, so I'll explain with the help of an example. Take the first problem.
Write the dual of maximize z equal to 2x1 minus x2 plus 4x3 subject to x1 plus x2 plus 2x3 less than or equal to 12, 2x1 minus x3 less than or equal to 4, 2x1 minus x2 minus 3x3 less than or equal to 5, and all the variables greater than or equal to 0. Because कभी कभी क्या होता है, when you convert the problem to dual, it becomes simple. It is easy to solve such type of problem. That is why we just study this dual part. Okay, so what I will do is I'll just show you a method. तो हम क्या करेंगे? Now see how many variables are given in the problem. There are 3 variables given, x1, x2, x3. So I'll write that variable first. ठीक है? जितने variables दिए हैं उसको we will write it over here. x1, x2, x3. Okay? Then write the coefficients of x1, x2, x3 from here. Write the coefficients of x1, x2, x3. तो क्या हो जाएगा? 2, -1 and 4. ठीक है? पहले देखने हैं कितने वेरिएबल्स दिए हैं. जो वेरिएबल्स है उसको यहाँ पे लिखना है. Then take the z function or the objective function. वहां पे जो कोएफिशिएंट्स हैं x1, x2, x3 we'll write as 2, -1 and 4. उसके बाद take the constraints. कंस्ट्रेंट्स में जो भी कोएफिशिएंट्स ऑफ x1, x2, x3 है उसको हम नेक्स्ट मैट्रिक्स में लिखेंगे. तो 1, 1, 2. 1, x2 is not there, so 0, -1. Then 2, this is -1. No? Again, I made a mistake here. 1 second. This is -1. This is -1, so this also will become -1 here. Ma'am, and that 3 is also -3. -3, yes, yes, correct, correct. Just tell me if there are any mistakes so that I can correct it here itself. माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी, यहाँ पे राइट, यहाँ पे माइनस हो जाएगा. I think it's okay now. Let's see, we'll just yeah. So now you can just check the coefficients. 1, 1, 1, 2, 1, 0, minus, sorry, 2, 0, -1, 2, -1 and -3. उसके बाद राइट हैंड साइड ले लेंगे and that will write as 12, 4 and 5. ठीक है? हमने इसको पहले ऐसा लिख दिया. अभी हमें इसको पूरा उल्टा करना है. उल्टा करना है मतलब ये जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और इसका ट्रांसपोज लिखना है हमको. ठीक है? तो ये पूरे जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जैसा हो जाएगा. जो कॉलम है वो यहाँ पे रो हो जाएगा, जो रो है यहाँ पे कॉलम हो जाएगा और यहाँ पे भी रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे. सो राइट द नेक्स्ट मैट्रिक्स एज, सो हियर 12, 4, 5 कॉलम में था तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया. देन 2, -4 यहाँ पे रो पे था तो दैट विल कम इन द नेक्स्ट पार्ट. एंड देन ये जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिखा है. सो 1, 2, 2, 1, 2, 2 यहाँ पे कॉलम था तो उसको मैंने रो में लिख दिया. 1, 0, -1 यहाँ पे कॉलम था तो यहाँ पे रो में लिख दिया. 2, -1, -3 again I've written over here. Okay, so first you write the coefficient, the variables first, and then write the coefficients of these variables from the objective function. Write the coefficients of these variables from the constraint as one matrix, and then write the right hand side of each constraint by this matrix, column matrix. और इसका पूरा ट्रांसपोज निकालना है. जो कॉलम है वो रो हो जाएगा और जो रो है वो कॉलम हो जाएगा. ओके, सो आई विल गेट इन दिस फॉर्म 12, 4, 5, 2, -1, 4 और यहाँ पे भी रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे. तो आई विल गेट दिस. नाउ इफ आई सी देयर आर 3 वेरिएबल्स, तो हम लोग जो ड्यूअल में वेरिएबल्स को y1, y2, y3 से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे x1, x2, x3 होता है गिवन प्रॉब्लम में, बट इन द dual we replace the variables by y1, y2, y3, and instead of z we will get the variable as w. That is the notation used to write the dual of an LPP. ठीक है? तो ये वाला समझ में आ गया सबको कैसे लिखा हमने. तो जितने भी यहाँ पे कॉलम्स हैं उतने वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाएंगे.
यहाँ पे x1 x2 x3 3 था, तो वी गॉट 3 कॉलम्स हियर। तो यहाँ पे भी जितने कॉलम्स हैं, okay, that many variables you have to write. So since we have 3 columns, we have y1, y2, y3. Okay, I'll repeat it again. तो फर्स्ट स्टेप इज, हाँ, सबसे पहले हमको ये देखना है कि अगर मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है तो ऑल द कंस्ट्रेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू. If it is a maximization problem, all the constraints should be less than or equal to. So here it is okay. We are having a maximization problem and we are having all less than or equal to constraint. Then what we have to do is see how many variables are given in the problem. This problem is called as a primal problem. The given problem is called as a primal problem. So how many variables are given, we have to see. So x1, x2, x3, since 3 variables are given here, we will write x1, x2, x3. फिर जो भी कोएफिशिएंट्स है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसको हमें यहाँ पे लिखना है. x1 का कोएफिशिएंट 2 है, x2 का -1 है, x3 का 4 है. इसको यहाँ पे लिखना है. उसके बाद come to the constraints. Constraints में there are 3 variables. So write the coefficients of each variable. First constraint as first row, second constraint as second row, and third constraint coefficients as third row. उसके बाद राइट हैंड साइड को हमें यहाँ पे कॉलम जैसा लिखना है. ओके, दिस इज अ मेथड टू राइट द ड्यूअल. ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू इज आफ्टर राइटिंग दिस टेबल और राइटिंग दिस मैट्रिक्स फॉर्म, व्हाट वी हैव जस्ट टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस. ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स. तो जो यहाँ पे रो है वो यहाँ पे कॉलम हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और जो यहाँ पे कॉलम में है वो यहाँ पे रो हो जाएगा. यहाँ पे भी जो रो है वो कॉलम हो जाएगा and जो column है वो row हो जाएगा. Interchanging rows and columns. Clear now? And since we are having three columns here, we will have 3 variables, and in the dual the variables are represented by y1, y2, y3. Now any doubt? Yes, clear ना? Anybody else? खाली हमको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है और उसका हमको ट्रांसपोज निकालना है. ओके, एंड जितने भी कॉलम्स आते हैं ट्रांसपोज के बाद उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे लिखने हैं. उसके बाद नाउ सिंस द गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन, तो ड्यूअल हो जाएगा मिनिमाइजेशन. z के बदले वी आर यूजिंग द वेरिएबल एज w टू शो दैट दिस इज द ड्यूअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. फिर यहां से लिखना है 12y1, 4y2, 5y3. ओके, सब्जेक्ट टू पहला कंस्ट्रेंट y1 plus 2y2 plus 2y3, and since we are having minimization problem, constraints हो जाएंगे greater than or equal to, this is 2. Then y1 plus 0y2 minus y3 greater than or equal to -1. 2y1 minus y2 minus 3y3 greater than or equal to 4. तो second constraint हो जाएगा y1 0y2 minus 2, again y3 आएगा ना यहाँ पे. This is also again y3. Same mistake here also. This is y3. And then the third constraint, 2 minus 1 minus 3. 2 minus 1 minus 3 means 2y1 minus y2 minus 3y3 greater than or equal to 4. Okay, since all the constraints are having an inequality, we will have all the variables greater than or equal to 0. Okay, since all the constraints are inequalities, अगर यहाँ पे equality constraint दिया है तो यहाँ पे एक variable unrestricted हो जाए. That I will show you in the next problems. Okay, since यहाँ पे all the constraints are inequalities in the given problem, all the variables will become greater than or equal to 0. Clear now? तो पहले हमको चेक करना है कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है. अगर मैक्सिमाइजेशन दिया है तो सब कंस्ट्रेंट्स को लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट करना है. अगर मिनिमाइजेशन दिया है तो सब कंस्ट्रेंट्स को ग्रेटर और इक्वल टू में कन्वर्ट करना है. वो होने के बाद राइट द वेरिएबल्स हियर, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ दीज वेरिएबल्स फ्रॉम द z फंक्शन, from the constraints, and then the right hand side. इसका पूरा ट्रांसपोज लेना है. ट्रांसपोज का मतलब होता है कि इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स. उसके बाद जितने नंबर ऑफ कॉलम्स दिख रहे हैं यहाँ पे
that many variables will come and then write the minima. अगर यहाँ maximization है तो यहाँ minimization होगा with all the constraints greater than or equal to. तो यहाँ पे solve नहीं करना हमें, we are just writing the dual. Solve करना, that part is the next part. But now I'm explaining you how to write the dual of the given LPP. And since all the constraints are inequalities, we will get all the variables in the dual greater than or equal to 0. ठीक है? Any doubt? Anybody? और एक दो करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. Don't worry about it. So first, if any one of the constraint is greater than or equal to, then we have to convert. Multiply by minus sign. I will show you the next problem. If there are any greater than or equal to constraint, then multiply that particular constraint by -1 and make it as less than or equal to. Okay? So it is compulsory that when the objective function is maximization, we should have all the constraints to be less than or equal to. अगर कोई भी greater than or equal to है तो हमें minus sign से multiply करके उसको less than or equal to में convert करना पड़ेगा. Clear? I'll show you the next problem where we have mixed inequalities. The next problem. Minimize z 2x1 minus 3x2 plus 4x3, 3x1 plus 4x2 plus 5x3 greater than or equal to 10, 5x1 plus x2 minus 2x3 less than or equal to 6, 6x1 minus 2x2 minus x3 less than or equal to minus 7, x1 plus x2 plus 3x3 greater than or equal to 2, and 2x1 plus 4x2 minus x3 greater than or equal to 4. ओके अभी हमको क्या करना है यहाँ पे, चेक द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइजेशन. सो इफ यू आर हैविंग एनी इनइक्वालिटी, देन द इनइक्वालिटीज अगर इक्वल टू साइन है तो हमें कुछ नहीं करना है. अगर इनइक्वालिटीज है तो हर एक इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए. ओके, if the objective function is minimization, then all the constraints should be greater than or equal to. If you have any constraint with less than or equal to, then multiply that constraint by -1 so that this inequality will change to greater than or equal to. So here the first constraint is greater than or equal to, second one is less than. तो हमें second कंस्ट्रेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना है ताकि दिस विल बिकम ग्रेटर देन और इक्वल टू. यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू है तो इसको भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन इक्वल टू बनाना है. बाकी दो तो सेम है हमारे पास. तो इफ यू हैव एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज मिनिमाइजेशन, कन्वर्ट ऑल द कंस्ट्रेंट्स. तो यहाँ पे मिनिमा, फिर से आई एम रीराइटिंग द प्रॉब्लम अगेन. 2x1 minus 3x2 plus 4x3. First constraint remains the same because it is greater than or equal to. Second constraint is less than or equal to. So I'm converting this to greater than or equal to by multiplying by minus sign. So minus 5x1 minus x2 plus 2x3 greater than or equal to minus 6. Whenever you multiply an inequality by minus sign, the inequality gets reversed. Third also, we are multiplying throughout by minus sign. So minus 6 plus 2x2 plus x3 greater than or equal to 7. Then these two same, x1 plus x2 plus 3x3 greater than or equal to 2, and 2x1 plus 4x2 minus x3 greater than or equal to 4, and x1, x2, x3 greater than or equal to 0. ये पार्ट क्लियर हो गया सबको. अगर मिनिमाइजेशन है तो सब कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, और अगर लेस मैक्सिमाइजेशन है तो सब कंस्ट्रेंट्स लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए. So since there were two constraints which were having less than or equal to constraint, तो हमने दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके उसको ग्रेटर और इक्वल टू कन्वर्ट कर दिया. ओके, उसके बाद हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिखने हैं.
तो कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, x1 x2 x3। तो पहले हम लोग वेरिएबल्स लिखेंगे x1 x2 x3। उसके नीचे जो भी z में जो x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स हैं उसको लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -3 एंड 4। ओके, उसके बाद जितने भी कंस्ट्रेंट्स दिए हैं हर एक कंस्ट्रेंट्स में से x1 x2 x3 की वैल्यू कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो आई विल हैव 3 4 5 फर्स्ट कंस्ट्रेंट, -5 -1 2 second constraint, -6 2 and 1 third constraint, 1 1 3 second constraint, 2 4 and -1 the last constraint। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेना है। दैट आई कैन राइट एज 10 -6 7 2 and 4। क्लियर दिस पार्ट टिल हियर ऑल ऑफ यू? ये पार्ट क्लियर है ना? पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप में अगर कोई इनइक्वालिटी अलग है तो उसको चेंज करना है डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद जितने वेरिएबल्स है उसको यहाँ पे लिखना है। x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स को हमने z के फंक्शन में से पहले लिखना है, फिर बाकी सब कंस्ट्रेंट से लिखना है, और उसके बाद हर एक कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखना है। नाउ टेक द रेसिप्रोकल, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये जो कॉलम है वो रो में आ जाएगा, ये जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा। इसका भी पूरा इंटरचेंज करना, पूरे मैट्रिक्स को घुमा दो, ओके, ताकि ये ऊपर चला जाए, ये उल्टा हो जाए और ये यहाँ पे आ जाए। सो नाउ व्हाट विल हैपन, तो नाउ व्हेन आई टेक द ट्रांसपोज, हाउ मेनी कॉलम्स विल बी देयर? ये जो पूरा कॉलम, ये जो एक कॉलम है, देयर आर हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 रोज आर देयर एंड 1 कॉलम। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितने रोज रहेंगे, मतलब कितने कॉलम्स रहेंगे? विल हैव 5 1 2 3 4 5। तो वी विल हैव 5 वेरिएबल्स। अगर हम इसको ऊपर लिखेंगे तो देन वी विल हैव 5 वेरिएबल्स हियर। फिर इसको ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिखना है, मतलब पूरा उल्टा लिखना है, जो रोज है वो कॉलम्स हो जाएंगे। तो आई विल राइट 3 -5 -6 1 and 2, 4 -1 2 1 and 4, 5 2 1 3 -1, और ये जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2 -3 and 4। ठीक है, तो जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं दैट विल बिकम द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे 5 कंस्ट्रेंट्स थे तो यहाँ पे 5 वेरिएबल्स आएंगे। ओके, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे, यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट्स आएंगे। कंस्ट्रेंट्स विल बिकम द वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स विल बिकम द कंस्ट्रेंट्स। 5 कंस्ट्रेंट है तो डुअल में 5 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स है तो यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट्स। ओके, नाउ राइट द what is that objective for the dual of that। तो अभी which function will come, max और minimum, maximization और minimization, कौन सा फंक्शन आएगा यहाँ पे dual में? Is it a maximization function or a minimization function? Max. Why? Because the given problem is a minimization problem। तो यहाँ पे हो जाएगा maximization। जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको हमें 10y1 -6y2 + 7y3 + 2y4 + 4y5 सब्जेक्ट टू पहला रो, पहला कंस्ट्रेंट हो जाएगा, सेकेंड कंस्ट्रेंट। नाउ व्हाट इनइक्वालिटी वी विल गेट इन द dual? What inequality will get in the dual? Greater than or equal to कि less than or equal to? Less than or equal to, because यहाँ पे function maximization है। जब भी maximization रहेगा, the constraints has to become less than or equal to। So we will write the first constraint, 3y1 -5y2 -6y3 + y4 + 2y5 less than or equal to 2, because the objective function is maximization, constraints has to be less than or equal to। minimum है तो सब greater than or equal to constraint में होना चाहिए। second will be 4y1 -y2 + 2y3 + y4 + 4y5 less than or equal to -3। then next constraint will be 5y1 2y2 + y3 + 3y4 - y5 less than or equal to 4। ठीक है, now in the objective function we are not having any inequality constraints, any equality constraints।
We are not having any equality constraints in the given problem. So here all the variables will also be greater than or equal to 0. अगर इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो जो कंस्ट्रेंट इक्वल टू है दैट पर्टिकुलर वेरिएबल विल बिकम अनरेस्ट्रिक्टेड. ओके, अगर कोई वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड है गिवन प्रॉब्लम में तो दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट विल बिकम एन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट. तो अगर यहाँ पे इक्वालिटी कंस्ट्रेंट दिया है तो हमें कुछ नहीं करना है, खाली लास्ट में यहाँ पे वो वेरिएबल लिख देना है कि अनरेस्ट्रिक्टेड है. ठीक है, होप यू आर फॉलोइंग दिस डुएल. एनी डाउट? ए डिविजन. I can see your chats. If you have any doubt, you can write or you can unmute yourself and ask. ठीक है, क्लियर है ना सबको? ओके, अगेन विल डू फ्यू मोर प्रॉब्लम्स और भी क्लियर हो जाएगा. केयरफुली लिखना है खाली. इफ वंस आई राइट दिस मैट्रिक्स देन इट बिकम्स वेरी इजी. नहीं तो उसको ऐसा लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x1 को हमें पहला कंस्ट्रेंट लिखना पड़े, कोएफिशिएंट ऑफ x2 सेकंड कंस्ट्रेंट, कोई ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग. But normally I explain with the help of a matrix, so it's clear. Like the next problem. Next we have an unrestricted variable in the given problem. Maximize z equal to 3x1 plus 5x2 plus 7x3 subject to x1 plus x2 plus 3x3 less than or equal to 10. 4x1 minus x2 plus 2x3 greater than or equal to 15, x1, x2 greater than or equal to 0, and x3 is unrestricted. सबसे पहले हमको चेक करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा दिया है, मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है. अगर मैक्सिमाइजेशन है तो ऑल द कंस्ट्रेंट्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू. तो यहाँ पे सेकेंड कंस्ट्रेंट है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो वी हैव टू कन्वर्ट द सेकेंड कंस्ट्रेंट टू. अगर इनइक्वालिटी है तो ही चेंज करना है, इक्वालिटी को नहीं करना है. ओके, अगर मैक्सिमाइजेशन में अगर कंस्ट्रेंट्स इनइक्वालिटी है, मतलब अगर इक्वल टू साइन है तो हमें कुछ नहीं करना. अगर लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू फॉर्म में है तो जितने भी इनइक्वालिटीज है मैक्सिमाइज में लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए. तो वी विल कन्वर्ट द सेकेंड कंस्ट्रेंट. फर्स्ट कंस्ट्रेंट रिमेन्स द सेम, सेकेंड कंस्ट्रेंट को हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x1 प्लस x2 -2x3 less than or equal to -15. ठीक है, so we are converting all the constraints to less than or equal to because the objective function is a maximization function. And then whatever is given, we will write that. ठीक है. Now, अभी हमको क्या करना है? There are 3 variables. So we'll write the 3 variables now: x1, x2, x3. Write the coefficients of x1, x2, x3 from the objective function. So 3, 5, and 7. Write the coefficients of x1, x2, x3 from the constraints, left hand side. Write the coefficients of x1, x2, x3 from the left hand side of the constraints. So we will have 1, 1, 3, -4, 1, -2. Then write the right hand side of each constraint, that is 10 and -15. Now take the transpose. When you take the transpose, tell me how many variables will be there in the dual. Yes. A division, how many variables in the dual? Okay, Tejas is saying 2. 3 कैसे आएगा? Who told 3?
3 कैसे आएगा? इसको हमें उल्टा करना है, उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 10 15, तो ये आई राइट 10 एंड माइनस, यहाँ पे दो ही नंबर्स है ना यहाँ पे, तो दो ही वेरिएबल्स आएंगे यहाँ पे। ये जब हम उसको उल्टा, जब ये कॉलम को हम रो करके लिखेंगे तो यहाँ पे दो ही नंबर्स आएंगे। दिस नंबर्स विल डिसाइड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो दिस विल बिकम द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। फिर से ट्रांसपोज लिखा तो 1 - 4 1 1, 3 - 2 and then 3 5 7. Clear? I don't know who told 3. I cannot see the. Understood how it has become, how it is 2 not 3. 3 जो गिवन में 3 है, लेकिन जब हम इसको इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ पे दो ही बचता है, दो ही कॉलम्स रहेंगे 10 - 15, तो इसीलिए दो ही वेरिएबल्स आएंगे y1 y2. नाउ राइट द सब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे मैक्सिमाइज दिया है तो यहाँ पे होना चाहिए मिनिमाइजेशन. So minimization we write as W to represent the dual 10y1 minus 15y2. ठीक है, then now यहाँ पे और एक चीज चेक करनी है. Here two variables are, I told you variables are converted to constraints. Variables are converted to constraints. There are 3 variables, so we will have 3 constraints. The first constraint, second constraint, third constraint. But first 2 variables are greater than or equal to 0, which means that first 2 constraints will be greater than or equal to the answer. We will have an inequality for first 2 constraints. But since the third variable is unrestricted, the third constraint will be an equality constraint. Since the third variable is an unrestricted variable, we will have the third constraint to be an equality constraint. अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो इसके हिसाब से यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाएगी. लेकिन अगर कोई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे थर्ड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो थर्ड कंस्ट्रेंट इक्वालिटी. अगर फर्स्ट वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट विल बिकम एन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट. और यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, दे आर ऑल हैविंग इनइक्वालिटीज हियर. So all the variables will be greater than or equal to 0. तो इसके हिसाब से हमको ये नहीं लिखना है. ओके, इसके हिसाब से हमको कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं. वेरिएबल्स के हिसाब से हमको कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं और कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से हमको ये वेरिएबल लिखना है. Since all the constraints are having inequality, तो all the variables are greater than or equal to 0. Now जो भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड दिया है गिवन प्रॉब्लम में, so that particular third variable is unrestricted, so third variable will become equality constraint. आया कैसे कन्वर्ट करना है? जो वेरिएबल है वो हो जाएगा कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट, और जो कंस्ट्रेंट है वो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर दिस पार्ट? As the third variable is unrestricted, variables are converted to constraints. थर्ड वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड. ओके, थर्ड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो थर्ड कंस्ट्रेंट विल बिकम एन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट. अगर फर्स्ट वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड दिया होता तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट विल बिकम इक्वालिटी कंस्ट्रेंट. जो भी वेरिएबल्स अनरिस्ट्रिक्टेड है, करस्पॉन्डिंग टू दैट कंस्ट्रेंट विल बिकम एन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट. सिंस यहाँ पे x3 वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड, we will get the third constraint to be equal to will be an equality constraint. And since जो जितने भी constraints हैं, that will be converted to the variables. 2 constraints हैं, तो we will have 2 variables, and all these constraints are having inequality, so these variables will also be greater than or equal to 0. Clear now? Yes. Unrestricted will be converted to equality constraint. Equality constraint will be converted to unrestricted variable. Equality, अगर यहाँ पे equality constraint है, तो जो भी constraint equality है, that variable will become unrestricted. या जो भी variable unrestricted दिया है, तो that constraint will become an equality constraint. There is a connection between unrestricted variables and an equality constraint. Okay.
Clear? Okay. Next one again. कौन सा repeat करना है दिशा? Which part you want me to repeat? Whichever is an unrestricted variable in the, you have to write all the constraints, है ना? y1 minus 4y2, y1 plus y2, 3y1 minus 2y2, सब लिखना है हमको. But when you have any variable, remember variable is converted to constraint. So if you have the third variable unrestricted, then the third constraint in the dual will become an equality constraint. Third variable is unrestricted in the given problem. So correspondingly, third constraint will become an equality constraint. Okay. Suppose you have an equality constraint here, then that particular variable will become unrestricted. Okay, दिशा क्लियर? बाकी से हमको सेम रखना है. अगर यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड दिया है तो यू शुड नॉट राइट एन इनइक्वालिटी हियर. वी विल हैव एन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट. ओके, सो अगेन विल डू वन मोर. इट विल बी क्लियर. नेक्स्ट अगर लिया हमने तो now can you tell me which variable in the dual will become unrestricted? Which variable in the dual will become unrestricted? Unrestricted कैसे डिसाइड करना है? डिपेंडिंग अपॉन द इक्वालिटी कंस्ट्रेंट. यहाँ पे दो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है और these constraints will become the number of variables. ओके, उसके बाद पहले सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है. सो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइजेशन. इफ देर आर एनी इनइक्वालिटीज, if there are any inequalities, then you have to convert to less than or equal to. If there are no inequalities, you are having both equalities here, then you need not convert that. ठीक है. अगर इक्वालिटी साइन है तो हमें कुछ नहीं चेंज करना है. अगर लेस देन और इक्वल टू है या ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो हमको चेंज करना है. So if you have an inequality, then only it has to be converted to less than or equal to. If you have an equality constraint, leave it as it is. फिर हमको number of variables लिखने हैं. x1, x2, x3. Don't convert this to less than or equal to constraint. जैसा है वैसे ही रखना है. अगर greater than or equal to है तो उसको change करना है हमको. Then we have 2, 3, 1. Coefficients from the objective function, coefficients from the constraints, and the right hand side. So now how many variables in the dual? Two. How many variables? It is 2. Why it is 2? Because when you write this here, we will have only two numbers over here. So it is going to be 2. So y1 y2, so 6 4 हो जाएगा. इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे 4 1 3 2 1 5 and the right hand side will become 2 3 1. Okay. Now what is the first? Now what is objective function? यहाँ पे maximization था तो यहाँ पे हो जाएगा minimization w 6y1 4y2. Okay. Now what about these constraints? Are these constraints an inequality होगा या equality होगा? Equal to sign लिखना है या inequality लिखना है? Harsh is saying equality. Huh? Why it is equal to? Equal to कैसे कब होता है? Yes. अगर यहाँ पे unrestricted variable है तो equality होता है. यहाँ पे कोई भी variables unrestricted नहीं है. Okay? जैसे previous problem में x3 was unrestricted. तो हमने थर्ड कंस्ट्रेंट को इक्वालिटी कंस्ट्रेंट लिखा है. बट यहाँ पे all the variables are greater than or equal to 0, which means that all the variables will be
having an inequality only. So we'll have 4y1 plus y2. Since we have minimization, we will have greater than or equal to constraint. Okay, 3y2 minus plus हो जाएगा ना ये वाला part. It's plus here. Okay, this becomes plus here. Then y1 plus 5y2 greater than or equal to 1. Now tell me about the variables y1 and y2. What type of variables are y1 and y2? Unrestricted. Why? Because these two constraints are equality constraints, so that those two variables will become unrestricted variables. So here y1, y2 both are unrestricted. यहाँ पे equal to है करके यहाँ पे equal to है करके यहाँ पे equal to आएगा ऐसा नहीं है. यहाँ पे equal to आया तो यहाँ unrestricted. यहाँ पे greater than or equal to 0 आया तो यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड आया तो यहाँ पे इक्वालिटी कंस्ट्रेंट. ओके, these constraints में जो इक्वालिटी है that will decide upon this constraint, and if you have here unrestricted variable that will decide the equality constraint in the dual. है अभी थोड़ा कंफ्यूजन लाइक है ना. Equality will be converted to unrestricted variables. Variable is converted to constraints. Constraints are converted to variables. Okay, this one you try it on your own पहले, उसके बाद बताओ आंसर क्या होगा. Just do it carefully. So you are having a minimization problem. You are having a minimization problem, which means that if you are having any inequality, that will be converted to greater than or equal to. Equality sign को हमें कुछ नहीं करना है. अगर यहाँ पे inequality है तो वो होना चाहिए greater than or equal to. इसको वैसे ही रखना है हमको. ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट वो होगा. पहले वाले इनइक्वालिटी को हमने ग्रेटर और इक्वल टू में कन्वर्ट किया. सेकेंड वन तो ऑलरेडी ग्रेटर, और थर्ड को हमको वैसे ही रखना, कोई चेंज नहीं करना. ठीक है, इक्वालिटी को हमें टच नहीं करना. वी नीड नॉट चेंज द इक्वालिटी. यहाँ पे इक्वल टू साइन है, उसको चेंज नहीं करना है. अगर मिनिमाइजेशन है तो बाकी जितने भी इनइक्वालिटीज हैं उसको ग्रेटर और इक्वल टू में कन्वर्ट करना है. ओके, उसके बाद नाउ राइट द वेरिएबल्स. Write the variables. 3 variables are there: x1, x2, x3. Coefficients of x1, x2, 1, -3, -2, -3, 1, -2, 2, 4, -4, 0, -4, 3, 8. Right hand side is -7, 12, and 10. I will continue the next lecture because ma'am is taking at 2 o'clock. So I'll just complete this portion so that I will not repeat again and again. एक बार ये पूरा flow में हो जाएगा dual का जो part है. I thought of taking at 2 o'clock, but then ma'am is taking at 2 o'clock. MUP lecture at 2 o'clock I think today. So I will take now. Continue for at least half an hour or 45 minutes, not more than that. ठीक है?
Okay. Now tell me what to say. Which constraint? Now, how many constraints you will have? 3 constraints here. And tell me which constraint will be having an equality constraint. Which constraint in the dual will have an equality constraint? Harsh is saying 2. Others? Second constraint. Second, why it is second? Because x2 is unrestricted. So that part is clear. बाकी जो दो variables हैं यहाँ पे it is not unrestricted. So we can write the inequality corresponding to that. Only the second variable is unrestricted here. The second constraint हो जाएगा equality. Now, how many variables are unrestricted in the dual? How many variables are unrestricted in the dual? One variable. So which variable is unrestricted in the dual? Y3. Y3. Very good. Y3 is unrestricted in the dual. ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स का मिनिमम का मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा. Then say -7 + 12 + 10 -3 + 2 -4 less than or equal to 1. क्योंकि why less than or equal to 1? Because we have maximization function and only the second variable is unrestricted. So second constraint में equal to sign आ जाएगा और फिर third में same रहेगा. और उसके बाद here the third variable is equal, third constraint is an equality constraint. So third variable will become an unrestricted. ओके, यहाँ पे जो थर्ड कंस्ट्रेंट है इक्वालिटी है, तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड, सेकेंड वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड है, तो सेकेंड वेरिएबल सेकेंड कंस्ट्रेंट इज इक्वालिटी कंस्ट्रेंट. ठीक है, in the book you will find they have done all complications here, x1 dash x2 dash. I'm not doing anything else. खाली इतना ध्यान देना है कि इक्वालिटी है तो that will be converted to unrestricted, and if you have an unrestricted variable it is converted to equality constraint. ये तो बहुत बड़ा हुआ था उसको सॉल्व करने के लिए. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन दैट थिंग. अभी क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा? What is that? Ma'am is taking or not? I don't know. She's sometimes sending the message that at 2 o'clock. Okay, next one. Y2 will be, sorry, 1 second. Y2 कैसे unrestricted होगा? Because the second constraint is not an equality constraint. उत्तरा, जो भी इक्वालिटी है दैट अभी 3 कंस्ट्रेंट्स है. ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे यहाँ पे. तो सेकेंड कंस्ट्रेंट इज हैविंग एन इनइक्वालिटी, तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा. ओके, so he is equality, this is equality constraint, that is a third constraint which is equality constraint, so third variable will be unrestricted. ठीक है उत्तरा? ओके, कौन सा this side ना दिशा? Example 5 you're talking about, no? हो गया? ओके, और एक करेंगे. Maximize z x1 + 3x2 - 2x3 + 5x4 subject to
Yeah. So here maximize Z, 4 variables are given. Both the constraints are having equality constraint. So we need not convert this to inequality, keep it as it is. So we will write the variables now, x1, x2, x3, not x4. And this is x4. Change that. ये जो part है 4. Okay, this is 4. This is 4. Then write all the variables 1, 3, -2, and 5. All the variables from 3 minus 1, 1 minus 4, 5, 3. Five, 3 minus 1 minus 2, 6, 4. So now variables in the dual will be 2. So we will have y1, y2, 6, 4, 3, 5, minus 1, 3, 1 minus 1, minus 4 minus 2, 1, 3, minus 2, 5. Objective function will become minimize. So how many constraints will be there in the dual? How many constraints will be there in the dual? Constraints. Constraints कितने होंगे? 4. Constraints will be 4 because we are having 1, 2, 3 and 4. 4 constraints. 4 constraints में से which constraint will be having an equality constraint? टोटल 4 constraints होंगे. कौन से constraint में equality constraint आएगा? x3 and x4 unrestricted. x3 and x4 unrestricted. तो third and fourth constraint में आएगा. Okay. So I will write first constraint 3y1 plus 5y2 greater than or equal to 1. And then minus y1 plus 3y2 greater than or equal to 3. y1 minus y2 equal to minus 2. Why it is equal to? Because we are having x3 unrestricted. So third constraint is equal to, and then we have last constraint is also equal to constraint. Third and fourth. Correct. Now, which variable is unrestricted? y1 and y2. y1, y2. Why y1, y2? Because these two constraints are equality constraints. So corresponding to that, those two variables will become an unrestricted variable. So y1, y2 is unrestricted. Okay? So this is the dual of the given LPP, or the given problem is called as a primal. Okay? We are calculating the dual. Maximize will be converted to minimization. Number of constraints will become the number of variables. Number of variables will become the number of constraints. And then we have, what is that? Unrestricted variables will become equality constraint. Equality constraint. यहाँ पे 2 variables unrestricted हैं, तो 2 equality sign. यहाँ पे 2 equality हैं, तो दोनों variables unrestricted. Equality in the given problem will be converted to unrestricted, and the unrestricted variables in the given problem will be converted to equality.